Good morning, students. Welcome to the class 12 Commerce. Myself, Mohsin Patel. I will be conducting lectures for the subject Business Studies. Before starting Business Studies lecture, I would welcome you to the Commerce field. In this Commerce, you will be learning a lot of things and you will be experiencing more and more about the business and business environment itself. So, I am starting with the chapter number 1, Nature and Purpose of Business. Before starting, I would introduce you what is business itself and why business is necessary. So, let's begin with the topic known as Introduction and the Concept of Business. Before starting this, I would say that you are an economic student for 10th standard. You have studied about barter system. So business is not the new concept for you, as business has been a tradition from the olden days, ancient days, in that we were used to have a barter system. In that barter system, the exchange of goods were being communicated. In terms, if I require wheat and another person require fish, so we deal with that in a situation. I have a fish, I'll give it to that person, and that person will give me a rice or wheat, whatever I required. But there was a situation where the person doesn't require that fish or any other thing. So that time, there was a huge problems related to going with the barter system. In that barter system, the person was facing lot of problem. In that problem, the king of that time, they have introduced metal coins and then gold coins for the transaction purpose of selling the goods to the another person. On that behalf of that coin, the person was able to buy another product in the market itself. So, here we will start our topic as a business. What is business? The term business is derived from the word busy. Business means busyness. अब बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो और जिससे आपको फायदा नहीं हो रहा हो वो बिजनेस है. नो. The example is very much clear. You sell your mobile on OLX or Quaker.com. It doesn't mean it's a business. It's a need. You earn the profit from that business, but it is not considered as business. आप वो प्रोडक्ट बेचते जरूर हो, आप प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो, लेकिन वो आपका बिजनेस नहीं. बिजनेस का मकसद यहाँ पर क्लियर है. You do it on a regular basis to the customers. They say to sell the product to the customers on regular basis is known as business. बिजनेस में आपका फायदा होना चाहिए, बेनिफिट्स होने चाहिए, उसी को हम लोग बिजनेस कहते हैं. So let's begin with the introduction of the business. Business refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production, and or sales of goods and services with the view or aim of earning profits. Business एक ऐसा सोर्स है जिसमें ऑक्यूपेशन है, मीन्स आप इसे बिजनेस बना रहे हो या आप इससे काम लेते हो. ऑक्यूपेशन इन विच रेगुलर एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. बिजनेस ऐसा होता है जिसके अंदर आप परचेज करते हो, प्रोडक्शन करते हो, सेल्स करते हो. किसका करते हो सेल्स? आप गुड्स एंड सर्विसेज का सेल्स करते हो. गुड्स कोई भी टाइप का गुड्स हो सकता है. एनी काइंड ऑफ गुड्स कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. योर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट. आपका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये होता है कि आप प्रॉफिट अर्न करोगे. सो बिजनेस इज अ ऑक्यूपेशन which has to be repeated or regularly it has to be worked on is known as business. On the main objective is to earn profit. आप परचेज करते हो, प्रोड्यूस करते हो, फिर बाद में सेल करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का with the objective of earning profit is known as business. अब बिजनेस के लिए यहाँ पर आपको रेगुलरली वर्क करना पड़ता है और रेगुलरली
बाद में आपको रेगुलर बेसिस पे सेल करना पड़ता है, तब जाके आपका बिजनेस कंसीडर किया जाएगा। वेरएस मैंने आपको भी पहले ही OLX एंड क्विकर का एग्जाम्पल कहा था, जिसमें आप प्रॉफिट अर्न तो करते हो लेकिन आप उसको रेगुलरली सेल नहीं करते। बट अगर आपने फ्लिपकार्ट या फिर बाद में Amazon हो गया या क्विकर हो गया, जहाँ पे आप रेगुलरली आपके मोबाइल को प्रमोट करते रहते हो और आपका रेगुलर प्रमोशन आपका प्रोडक्ट बिकते जा रहा है और आपको उससे प्रॉफिट मिलता है, तो वो आपका बिजनेस कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन OLX पे या फिर क्विकर में आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम अगर प्रोडक्ट बेचते हो और उससे आप जब प्रॉफिट अर्न करते हो, तो वो आपका बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मकसद ये है कि आपको रेगुलर बेसिस पे आपको काम करते जाना है और प्रोडक्ट आपको बेचते जाना है। सो यहाँ पर बिजनेस का मीनिंग एकदम क्लियर है। सो बिजनेस के अंदर हम लोग 2 और टाइप देखते हैं, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन वो भी वर्क होता है। So let's begin with the 2 categories of economic and non-economic activity. I have classified into 2 parts, is economic activity and non-economic activity. As earlier I told you that economic activities are those activities which are being done for the money or to earn the money. It is known as economic activity. Whereas if I am talking about non-economic activity, your money is not involved. Here are love, sympathies and sentiments, patriotism are included over here. It is considered as non-economic activities. So let's go with one by one. I have an example over here. I have written example also. You would be understanding better with this. Economic activity. Economic activities are those activities by which we earn our livelihood. इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसा एक्टिविटी है जिससे हम पैसे अर्न करते हैं और अर्न करने के बाद में अपने ऊपर खर्चा कर सकते हैं, उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई हैव एग्जांपल ओवर हियर, आई हैव 2 एग्जांपल राइट नाउ बाय राइटिंग। डॉक्टर ऑपरेटिंग इन क्लिनिक, डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वो आपको सर्विस देता है, तो सर्विस देने पे आप उसको फीस पे करते हो। इट इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। टीचर टीचर्स इन स्कूल, हम टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आपको जब पढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली हमें भी सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो गुड्स के बारे में बात करते हैं। द गुड्स विच यू आर परचेजिंग फ्रॉम द होलसेलर और रिटेलर, इट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज द कंपनी अल्टीमेटली गेट्स द मनी आफ्टर प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट and you are purchasing from retailer or wholesaler at the market. When you pay the money, it is considered as economic activity. Let's begin on non-economic activity. Non-economic activities are those activities which performed out of love, sympathy, sentiments, etc. Here it is not related to money. Non-economic activities are those activities which are been coming with the love, sympathies, sentiments, patriotism, etc. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर जब हम लोग बात करते हैं, तो जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो सबके घर में होता है, कॉमन है, हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर देयर फैमिली। क्योंकि आप यहाँ पर जब बात करते हो फैमिली की, तो फैमिली के अंदर जो हाउस वाइफ होती हैं या मदर होती हैं, वो फूड बनाती हैं अपने फैमिली के लिए, बट दे डोंट अर्न मनी, वो पैसा अर्न नहीं करते, इसीलिए हम लोग उनको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। टीचर टीचर्स हर ओन सन और डॉटर, टीचर अपने बच्चे को पढ़ाती है तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसीडर नहीं होता, वहाँ पे आप मनी पे नहीं करते। इसीलिए यहाँ पे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक को मैंने क्लासिफाइड किया है इन 2 वेज। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, whereas नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं होता, इन सिंपल वर्ड्स। So we have seen today the introduction and the concept of business. In next lecture we will see the characteristics and the feature of business, and
then we will continue so and so. So that's it for today. Thank you.